Good morning, students. Today we are doing Science Revision 3 of Chapter 2, which is Plan, Structure and Function. Okay, what are we going to revise today? Okay, we are going to revise types of leaves. कौन से अलग टाइप के लीव्स होते हैं, वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेनेशन. वेनेशन क्या होता है, ठीक है, वील अंडरस्टैंड वेनेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक फ्लावर में कौन से पार्ट्स होते हैं. दीज आर द थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे. ऑल राइट, first we'll come to types of leaves. This is very simple, guys. Okay, so try to see what is the difference between these two leaves. We've already studied it. तो अगर आप देखोगे, जो लेफ्ट वाला लीफ है वो बस एक लीफ है, एक डंडी के ऊपर बस एक लीफ है, और दूसरे वाले जो राइट वाला लीफ है उसमें एक डंडी के ऊपर बहुत सारे लीव्स हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू सी इन दोनों लीव्स को क्या बोलते हैं and what is the difference between these two leaves. Okay, so the left leaf that we saw, the leaf on the left is known as a simple leaf. Single undivided leaves are called simple leaves. जब एक leaf होता है वो divided नहीं होता है, it's called simple leaf. Examples: leaves of guava and mango trees. guava के trees और mango trees पे जो leaf होता है वो सिंपल लीव्स होते हैं. ठीक है, सेकंड लेट्स सी, जो राइट साइड में जो लीफ है जिसपे एक डंडे के ऊपर बहुत सारे लीव्स हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स. ओके, लीव्स विच आर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल लीफलेट्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स. ये लीफ बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है. जो छोटा छोटा लीफ आपको दिख रहा है इनको लीफलेट बोलते हैं, लीफलेट. ओके, तो इसमें एक लीफ बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है. These leaves are called compound leaves. When one on one stem there are several leaflets. Okay, instead of one leaf there are several leaflets. It's called compound leaves. What are the examples? Leaves of rose and neem plant have compound leaves. तो रोज के प्लांट पर, नीम के प्लांट पर कौन से टाइप के लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं. ओके, so this is the diagram of simple leaf and compound leaf. This diagram is very important. एक बार इस diagram को देखो. अगर आपको एक बार लर्न करना है तो आप एक बार अपने नोटबुक में ड्रॉ करके भी लर्न कर सकते हैं. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी वेनेशन. तो इन दो लीव्स में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक पैटर्न है वेन्स का. वेन्स आपको पता है ना, वे दीदी शोइंग यू. ओके, राइट, सो दीदी हैज ड्रॉन इट. तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो बीच में एक वेन है. वेन हमने कल पढ़ा था, स्मॉल चैनल्स और कैपिलरीज. तो बीच में एक वेन है लेफ्ट साइड में और उसके साइड में जाते हुए ढेर सारे वेन्स हैं. ओके, तो ये है लेफ्ट साइड में. और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो कैसा डिफरेंस है, वेन सब पैरेलल है. बीच में एक वेन है, बीच में एक वेन है और बाकी सारी वेन्स उससे पैरेलल है. सारी वेन सीधी जा रही है. ओके, दीदी विल show you, draw and show you. Okay, राइट. सो लेफ्ट साइड में एक पैटर्न है वेन्स का, बट राइट साइड में कोई पैटर्न नहीं है. राइट साइड में सारी वेन्स एक दूसरे से पैरेलल है. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लीव्स. अब इसको क्या बोलते हैं, विल ट्राई टू लर्न मोर. ओके, दिस इज कॉल्ड वेनेशन. ओके, वेनेशन क्या होता है, वेन्स का अरेंजमेंट. वेन्स कैसे अरेंज्ड है उसको वेनेशन बोलते हैं. तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ. लैमिना हमने देखा था ना कल, क्या है, जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, जो लीफ का फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है उसको लैमिना बोलते हैं. तो लैमिना पे जो वेन्स का अरेंजमेंट है, वेन्स कैसे अरेंज्ड हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड venation. Okay, did all of you understand venation? You can ask Didi in on WhatsApp if you did not understand what is venation. Okay, अब venation दो टाइप के होते हैं, reticulate and parallel.
Okay, when the veins form a network, it is called reticulate venation. यहाँ पे लेफ्ट साइड रेटिकुलेट वेनेशन है, क्यों? क्योंकि वेन्स एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ मैंगो एंड बैनियन. मैंगो के ट्रीज और बैनियन के ट्रीज पे कैसा वेनेशन होता है लीव्स पर? Reticulate. Let's say parallel venation. When the veins run parallel to each other, it is called parallel venation. तो यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो सारे वेन्स एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है? सारे वेन्स सीधे जा रहे हैं, सारे वेन्स एक दूसरे से पैरेलल है, दे आर रनिंग parallel. So when the veins run parallel, it is called parallel venation. Example, leaves of wheat and grass. जो घास होती है या जो वीट का प्लांट होता है, उनके लीव्स में कैसे वेनेशन पाए जाते हैं? पैरेलल वेनेशन. ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. आप एक बार वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं टू रिमेंबर दिस बेटर इफ यू वांट, या तो व्हाइल दीदी इज टॉकिंग आप ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं to remember it. You have to remember both the diagrams very well. Of simple and compound leaves and reticulate and parallel venation. ये दोनों diagrams आपको अच्छे से याद करना है, okay, so that you understand the concept. Alright, next let's come to structure of a flower. Flower का structure कैसे होता है और flower के अलग अलग parts क्या होते हैं, okay, ये हम डिटेल में करेंगे कल. कल हम पढ़ेंगे कि ये सारे पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ये पार्ट्स क्या करते हैं, ये पार्ट्स क्या होते हैं, राइट? आज हम बस फ्लावर का स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द पार्ट्स. Okay, what are we doing today? We are only remembering the names of all the parts and we are trying to remember the structure of the flower. What do these parts do and the description of these parts we will do tomorrow. Okay, so you have to remember all these parts. I will list all the parts. You can repeat with Didi or you can pause the video and look at the diagram once to remember it. This diagram is also very very important. Okay, so the different parts are pedicel, receptacle, sepal, petal, ovule, stamen, anther, filament, pollen tube, stigma, style, ovary, and pistil. Okay, all of these parts are important. You have to remember their names. Didi will circle some of the important parts that you need to remember. Okay. These four parts are very very important and you have to remember them. Petals and sepals. First look at these. Petals are, आपको पता है ना, रोज का जो रेड रेड पेटल्स होता है वो पेटल्स होते हैं, और रोज के पेटल्स के नीचे वो थोड़ा सा लीव्स जैसे ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं ना, उनको सेपल्स बोलते हैं, ठीक है? तो दीज आर पेटल्स एंड सेपल्स. ऑलराइट, देन स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट. स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर में, मेल एंड फीमेल. स्टेमन इज द male reproductive part of the flower. Stamen consists of two parts. Okay, stamen के अंदर दो part होते हैं. Stamen consists of two parts, anther and filament. Stamen के अंदर दो parts होते हैं. कौन से parts होते हैं? Anther and filament. फिर आते हैं pistil पे. Pistil क्या होता है? Pistil is the female reproductive part. Okay, pistil is the female reproductive part. पिस्टल के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं. पिस्टल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स. पिस्टल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. व्हाट आर द थ्री पार्ट्स कॉल्ड? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. These two things you should remember very very well. Stamen, two parts. Two parts come under stamen, anther and filament.
Three parts come under pistil, stigma, style, ovary. Okay, two parts come under stamen, anther and filament, and three parts come under pistil, stigma, style, ovary. Okay, stamen is the male reproductive part consisting of anther and filament. Pistil is the female reproductive part consisting of stigma, style, and ovary. Remember this diagram. This diagram is very, very important. Okay, let's now see what are the scientific names of these parts. तो जो हमने सेपल्स देखा था, जो पेटल्स के नीचे लीफ जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं कैलिक्स. Okay, all the sepals together form calyx. Okay, remember this name really, really well. All the sepals form the calyx. Then corolla. All the petals देखा था ना हमने, रोज का रेड petals होता है, those are petals. All the petals form the corolla. All the petals form the corolla. So what are the first two important parts of the flower? Calyx, which consists of all the sepals. Corolla, which consists of all the petals. Okay, अब हमने देखा था stamen is called the stamen is the male reproductive part. Stamen को और क्या बोलते हैं? Androecium. Stamen is also called androecium. The scientific name of stamen is androecium. Androecium or stamen consists of two parts, anther and filament. Okay, androecium or stamen is the male reproductive part consisting of anther and filament. Gynoecium, हमने देखा था ना pistil. Pistil को scientifically क्या बोलते हैं? Gynoecium. Gynoecium क्या है? Female reproductive part. Okay, so gynoecium or pistil consists of three parts: stigma, style, ovary. Okay, gynoecium और pistil. Gynoecium को और क्या बोलते हैं? Pistil बोलते हैं. ठीक है, gynoecium pistil का scientific name है. So gynoecium or pistil is the female reproductive part which consists of three parts. Okay, gynoecium consists of three parts: stigma, style, ovary. Okay, remember this very well: stigma, style, ovary. Okay, amazing. I hope you understood everything. If you did not understand something, please tell Didi on WhatsApp. We will sort it out together. Please message Didi on WhatsApp if you did not understand. After watching this video, you have to read the fact sheet. दीदी एक fact sheet भेजेंगे. You have to read that fact sheet very nicely, and then after you watch this video, read the fact sheet, you will solve the worksheet. If you are not understanding how to solve the worksheet, you can ask Didi on WhatsApp, and I want to see everybody finishing their homework on time. All right, thank you everyone.